Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. A very happy Dhanteras to one and all present here. And today we'll be studying about national flag. As we all know, in national flags there are three colors, right? That is saffron, white, and green, right? Whereas saffron color indicates for the courage and strength, and white indicates peace, whereas green indicates for prosperity, growth, productiveness, right? In Ashoka Chakra, we can see there are 24 spokes, and one more important thing about national flag is it was our Constituent Assembly has adopted the national flag on 22nd of July 1947, and this flag was basically designed by Pinkia. This was the name of that person. So let's just begin with the beautiful poem about national flag, and please make sure that you all will be learning a very handsome amount of things in this poem. So let's just begin. So the title of our poem is Our National Flag, right? Reading and enjoying this interesting poem बहुत ही ज़्यादा interesting है. So when you see that national flag of beauty, जब भी आप वो flag देखते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी चीज़ें हैं, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटी ओवर हियर, इट्स बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट? डू यू फील द कॉल ऑफ ड्यूटी? डू यू फील कि इससे हमारे को देख के हमारा आधा पाव खून बढ़ जाता है और हमें अपनी देश की तरफ बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी वाली फीलिंग आ जाती है. वी बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल. सो डू यू हियर द बगल साउंडिंग इन आवर हार्ट? बगल साउंड इन आवर हार्ट का मतलब यही है कि यू फील लाइक देयर इज गूज बम्स ऑन योर बॉडी वाइल यू जस्ट सी योर नेशनल फ्लैग, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है. एंड व्हेन यू सी इट्स ग्लोइंग कलर्स, और हम उसके बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग कलर्स दैट आर ग्लोइंग ग्लोइंग चमक रहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं. डज इट सेट योर स्पिरिट ग्लोइंग? क्या आपको ये एक बहुत ही ज्यादा देशभक्ति वाली भावना देता है? फॉर योर कंट्री मेक्स यू स्ट्रॉन्ग टू डू योर पार्ट, कि आप अपने देश के लिए कोई बहुत अच्छा पार्ट प्ले करें. दैट फ्रीडम में नॉट पेरिश, वो कभी भी गायब नहीं होना चाहिए. फ्रॉम द लैंड दैट फ्री मैन चेरिश, जो हमें हमारे लोगों ने, हमारे सोल्जर्स ने हमको किसी भी तरीके से आज़ादी दिलाई है. डू यू डू योर पार्ट? क्या आपको ऐसा फील होता है? सो इट वॉज ऑल रिटन बाय लॉरा शेल्डन, राइट? मूविंग ऑन टू द वर्ड बास्केट, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ग्लोइंग. ग्लोइंग मीन्स फुल ऑफ जील, एंथुजियास्टिक, आपका जज्बे से भरा हुआ. फ्रीडम आप कह सकते हैं. लिबर्टी मीन्स आज़ादी, राइट? पेरिश मीन्स विच कम्स टू एन एंड, राइट? एंड जिसका जो खत्म हो जाए. चेरिश मीन्स enjoy, and part means duty. Moving on to the exercise, first we'll be completing the oral exercises where we'll be learning how to pronounce each word correctly. The very first word is beauty, then the next is bugle, next is sounding, then the next is heart, right? Then it's colors, then spirit, then it's freedom, and then cherish. Moving on to the tick the correct answers. When we see the flag of beauty, we feel what? We feel the call of what? We feel the call of duty, right? For our country, it makes you dash to do your part. It makes you strong to do your part. This poem belongs to what? This poem belongs to freedom, and this poem has been composed by Lorna Sheldon, right? Now moving on to the complete the lines of the poem. When you dash the beauty, what we do when you see the flag of beauty? राइट? डू यू डैश ड्यूटी? क्या आपको ड्यूटी जैसा रिकॉल होता है? डू यू फील द कॉल ऑफ ड्यूटी? राइट? डू यू हियर, आप अपने दिल की आवाज को सुनते हैं? डू यू हियर द बगल साउंडिंग ऑफ योर हार्ट? Right? And when blowing, and when what blowing, that is, and when you see the colors that are blowing. Right? And does it dash glowing? Does it set your spirit? And for your dash part, that is for your country. Makes you strong to do your part, right? Moving on to the true and false. Our flag reminds us of duty. It's true, right? Our national flag is beautiful. Again, it's true. No bugle sound produced in our heart. It's false, right?
Three men do not cherish. Again, it's false. And this poem has been composed by Jane Tyler. No, it's false. It's by Laura Sheldon, right? Moving on to the question answers, you all will be completing your question answers respectively by your own, right, in your notebooks. And I hope you all understood this poem. And please make sure that you'll be writing few lines on national flag. Please go and read about national flag, very important topic for your essay writing. So it's a homework for all of you that you have to write an essay for at least 75 words, that is at least 12 to 13 lines on your own, by reading it on a Google and writing all the facts regarding the national flag. Please do this homework and please keep smiling and stay hydrated and study properly. Thank you.